right? And then what I'll do is I'll simply release the accelerator, and now we are in the next gear. And then I'll do the same thing. I feel like now I should do it, so I have pressure on the accelerator, gear lever, and then I'll upshift. It's that simple. Hello everyone, I hope everyone is doing great. So yes, today we are going to learn about clutchless shifting, downshift and upshift as well. So हम दोनों ही सीखेंगे कि कैसे करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उनके, किन सिनेरियो में आपको क्लचलेस शिफ्टिंग यूज़ करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, एंड क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है. सो वी लर्न ऑल अबाउट दिस थिंग. सो बिफोर वी बिगिन आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइस नो कि इसमें मैं सारी चीज़ें डिफरेंट चैप्टर्स में ब्रेक करने वाला हूँ. जब आप टाइमलाइन में जाएंगे तो यू कैन सी कि सारे चैप्टर्स और सारे जो बुलेट पॉइंट्स हैं आपको दिख जाएंगे. सो आप वहाँ से नेविगेट कर सकते हैं इजीली, आपको जस्ट जो भी देखना है, राइट. सो दैट्स आउट ऑफ द वे. नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो. So before beginning, पहले we'll learn about clutchless shifting, कि what exactly it is, and once we are done with it, then we'll learn about how to do it. Okay. So clutchless shifting, basically we are going to shift or we shift gears without using our clutch, right? So हम clutch lever use नहीं करते हैं when we want to shift our gears. So that's clutchless shifting. So in simple terms, okay. Mechanically आप अगर इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो basically जब हम जब shift करते हैं gear तो we need to disengage our clutch, and तभी हम जैसे आप ये बोल सकते हैं हम ट्रांसमिशन को disengage करते हैं, उसके बाद we can shift our gears up हो या down हो, it does not matter. We'll have to make sure that the transmission is not engaged when we are trying to shift the gear. So that's the basic mechanical explanation for shifting. And when we use clutchless shifting, because clutch is the best way to disengage the transmission. So now we'll learn what's the perfect timing and when and how we use this method where we do not even touch the clutch to shift. So before I begin, I just want to say that जो मैंने आपको information दी है, that's like the only till my extent of knowledge. ये एकदम एक्यूरेट या एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं इस चीज़ में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ. बेसिकली मुझे करना आता है, एंड जो बेसिक एक्सप्लेनेशन जो मैं समझ पाया हूँ इस चीज़ को अब तक, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, राइट. सो फर्स्ट लेट्स सी हाउ वी नॉर्मली अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट और बाइक साइड. सो लेट्स से मैं अभी राइड कर रहा हूँ एंड नाउ आई फील लाइक आई नीड टू मूव टू द नेक्स्ट गियर. नॉर्मली हम क्या करते हैं, और कोई भी इंसान बाइक चलाता है वो ये करेगा कि अगर उनको दे फील कि अब उनको गियर लीवर शिफ्ट करना चाहिए, व्हाट दे विल डू इज सिंपली पुल इन द क्लच, राइट, and then upshift the gearbox, right. That's it, we are in the next gear now, right. ये करने के बाद this is the basic way, and to downshift as well, you just have to pull in the clutch and downshift, and then you're in the next gear, right. So that's the basic way to shift the gear. Now in clutchless shifting we do the same thing but without using the clutch. So when we are trying to use clutchless shifting method, what happens is that when we are revving up the bike, right, the transmission is engaged, but when we release the accelerator, the transmission is disengaged for few seconds or few moments, and we use that particular time to shift the gear upwards or downwards, right. So that's the basic idea about it. Yes, okay, so now I'll teach you guys how to shift upwards or downwards. So first of all let's try to learn shift upwards, because वो मुझे basically आता है, and जो downshift है वो थोड़ा सा मुझे like I'm not getting the hold of it. So मैं आपको basic idea दे दूँगा, but again I'm not good at it. Okay, I'm in the third gear at the moment, right, and I'm riding and I feel like I have reached the limit where I should shift upwards, right. So now what I'll do is, before shifting or releasing the accelerator, what I'll do is I'll put pressure on the gear lever, just slight pressure on the gear lever, right, and then what I'll do is I'll simply release the accelerator, and now we are in the next gear, and then I'll do the same thing. I feel like now I should do it, so I have pressure on the accelerator, gear lever, and then I'll upshift. It's that simple. So that's the way how you can upshift. This is the perfect time I can show you guys how to downshift. So basically we are accelerating, right. Again we'll do the same thing, we'll apply pressure on the gear lever and then release the gear, release the accelerator and then push downwards. So that's how simple it is. Okay, so I hope you guys understood upshift and downshift. अगर समझ में नहीं आता basically you can rewind it and see it. So the idea is to push the gear lever up and down when we release the accelerator. So now we have learned how to upshift and downshift. So now we'll learn when to do it. The idea is to shift when the transmission is not engaged, so that we can get perfect time, and then upshift or downshift so without using the clutch lever, right.
Okay, so after that I also wanted to tell you guys one thing, that in which scenarios you guys should use this method. So basically मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि किन scenarios में आपको ये यूज़ करना चाहिए clutchless shifting. So basically जहाँ पे आप you guys can see कि आपको aggressively gear change नहीं करना है, जहाँ पे आपको पता है कि हाँ मुझे gear बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, फिर बार बार चेंज करना भी पड़े बट आपको gear up and down ना करना पड़े बार बार. Right now I can see that मुझे सामने green light है and I think I should push to it. So what I'll do is I'll upshift and I can see that the road is clear, there will be no traffic, so I'll just push my bike without using my clutch. I know that I'll not have to stop, I'll not have to downshift. So yeah, that's how you do it. Basically ये वो सिनेरियो होगा जब आपको यूज़ करना चाहिए. So आपको तब यूज़ नहीं करना चाहिए जब आप ट्रैफिक में हो या फिर आप किसी बिजी रोड पे हो. तो उस सिचुएशन में I would not suggest you guys to do this. And also one more thing, that you should never try to learn this on the road. So मैं आपको ये बोलूँगा कि basically go to an empty street, और जो भी आपको या तो मॉर्निंग में या फिर रात को लेट नाइट go to the तभी आप बाहर जाना and try to learn this, because obviously आप normally नहीं चलाओगे आप इस तरीके से. You'll take a bit of time to shift upwards or downward. So you'll have to give yourself a little bit of time, and traffic would not react in the same manner, right? So आपको क्या करना होगा कि आपको फ्री टाइम लेना होगा जहाँ पे आपकी रोड बिजी ना हो, जहाँ पे एम्प्टी रोड हो वहीं पे ट्राई करना. ठीक है. नाउ मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे करना है, किन सिनेरियोज में करना है और क्या परफेक्ट टाइमिंग होती है. नाउ आई विल टेल यू गाइस व्हाई यू शुड यूज दिस. सो बेसिकली ऐसा कुछ फंडामेंटल रीजन नहीं है कि व्हाई यू शुड यूज दिस मेथड, बट what basically means that अगर हम इंडियन से पूछा जाए कि माइलेज कैसे बचाना है, तो कहेंगे भाई क्लच के जितना कम यूज़ करो उतना ज़्यादा माइलेज आएगा. बट टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा है. बट ये है कि एक्सेलरेशन बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं आप. अगर आप यू लाइक टू गो व्रूम व्रूम, बहुत इजीली आपको एक्सेलरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लच मेथड, राइट. एंड उसके बाद obviously अगर क्लच यूज़ नहीं कर रहे हैं then it will not wear off your clutch wire, so that's one benefit. But I think कि either way आपकी nowadays the bikes are built for way more rugged situation, so वैसे भी issues नहीं आते हैं. But again it's up to you. अगर आप करना चाहते हैं, if you feel like clutch यूज़ नहीं करना, तो in that case you can use it. आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. एंड कोई भी इश्यूज़ हैं सो यू गाइस कैन लेट मी नो. एंड वैसे भी आप जब मुझे बाइक चलाते हुए देखेंगे फ्यूचर वीडियोस में, अगर पुरानी वीडियोस भी देखोगे, एक तो जो डाली हैं, सो इन दोस एज वेल आई नॉर्मली शिफ्ट विदाउट क्लचेस, सो यू गाइस कैन क्लियरली सी इन दैट. एंड आप लोग अगर कभी आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा सैम्पल्स नहीं दिखाए तो प्लीज़ लेट मी नो दैट एज वेल. आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट जिसमें मैं कुछ बोल नहीं रहूँगा. आई सिंपली जस्ट शो when and how I shifted the clutch. So yeah, I hope you guys enjoyed the video, and I hope you guys found this video useful. And if you guys did, please do not forget to like and subscribe. If you guys thought there could be some improvement, please let me know. I'm all up for new ideas and new improvements in my channel. So that'll be all. Thanks a lot for watching. Okay, thank you so much for the on. Yeah, so that'll be all. Thanks a lot for watching. I hope to see you guys in the next one. Bye bye.